नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. This is the pre-market report video for 5th September 2025. That is today Friday. So let us start from the FnO data. FnO data, it's an important data for our market. Through FnO data analytics only, we will be able to identify what are the positions carried by the market participants, retailers, DIA, FA, and pros. So, and this is the only way for us to at least get some direction and idea. Okay, what is the positions or what are the positions uh, taken or carried by FI and pros for our market. आज हम लोग कैश मार्केट के डाटा से शुरू करते हैं. सो कैश मार्केट में आप लोग देखेगा तो एफ ने आज 106 करोड़ का सेलिंग किया. डी आई ए दे बॉट more than 2,200 crores. So the remaining selling, that is 2,100 crore, it must have done by pros and retailers. तो हम लोग यहाँ देखेगा तो एफ का बहुत कम नंबर है, लेकिन ये छुपा छुपम खेलते हैं हमारा साथ. तो पूरा एफ को डाटा और हम लोग डिटेल में देखेगा तो हमें मालूम पड़ेगा. तो एफ एन ओ में बियरिश क्या हुआ है. चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से. सो बिफोर दैट, हाउ टू रीड दिस डाटा. वेनसडे मीन्स डे बिफोर yesterday. Thursday means what all these market participants, retailers, DA, FA, and pros, what they have carried yesterday, that is Thursday. Total means what position they are, net position they are carrying it for today, that is Friday. So retailer ने negligible number में सेल किया 680 कॉन्ट्रैक्ट्स. अभी भी उसका जो नेट लॉन्ग है वो इंटैक्ट है 1.3 lakhs. दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर मार्केट. And DII, they sold 1,500 contracts and their total reduced to 34,000. And FA, they sold around 5,700 lots contracts and their total future short increased to 1.88 lakh. This number is not at all good for market upside momentum. अगर ऊपर गया भी है नीचे आ जाएगा. Pros, they purchased around 7,900 contracts and their total increased to 23,800 contracts. So if you look at the index future data, I would say this data is bearish because FA is bearish and retailers are the major longs. So let us also take a look at index code. Index code, if you look here till yesterday, retailers were net sellers, but today they purchased massive 1.24 lakh contracts of index code. So they become net longs in the index code, 80,000. DA no activity and FAI, they they also bought around 3,400 contracts, but this number is very negligible for some hedging it seems. The total reduced to 59,000. And pros, till yesterday, they were net longs holding more than 1 lakh index code. And today they have sold everything and they are net sellers. They have sold 1.28 lakh contracts of index code and their net long converted to net sell now, 22,000. And this data is also bearish because retailers are bullish and the other market participants they are bearish. Index put, if you look here, index put. So today retailers once again they added naked put writing. The total reached to 4.74 lakhs, 4.75 approximately. This is not at all good for our market. And both pros and FAs they are net longs in the index put. So FA they purchase 51,000 contracts and pros they purchase 44,000 contracts. So overall, I would say this data is bearish because retailers are only bullish. They are carrying naked put writing, and FA is carrying 2.7 lakh index put long, and pros also carrying 1.69 lakh index put long.
Let's also take a look at stock futures. Stock future में भी एक खराब खबर क्योंकि एफए ने और 32,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया और उनका जो नेट लॉन्ग reduced to 13.51 lakh. And the retailers here also they purchase around 7,500 contracts. The stock futures and DA also purchased 34,000. Pros they sold around 9,500 contracts. So overall, I would say this data is it's a though today we are seeing FIA and pros they sold some some of the stock future longs, but still the net positions are good. So I would say this data is mixed. I would say this data is bearish. We are coming to in the stock calls. Here also retailers purchased massive 83,000 stock call longs. So their total reached to 3.65. The other market participant बड़े लोग हैं जो FIA और close है और net sell में है. And I would say this data is also bearish because biggies pros and FIA they are short on stock call. And stock put में भी retailer ने कुछ 20,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया और उनका नेट सेल इन स्टॉक पुट रीच टू 2.53 lakh. The other participant FA they sold negligible number and pros they purchased 22,000. Overall, if you look here in the pros data, they are nets longs in stock put as well 2.22 lakh. So this data is also bearish. So overall, I would say FNO data is bearish. Even if market moves up, it will come down because of this retailers ultra bullish positions and biggies bearish positions. दोस्तों हम लोग एक बार मार्केट ओवरव्यू के ऊपर चलते हैं तो कल मार्केट में क्या हुआ और आज के लिए हमारा क्या व्यू रह सकते हैं और कुछ न्यूज़ फ्लोज और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं हमारा जो मार्केट में क्या हुआ कल का दिन। तो हम लोग यहाँ देखें तो निफ्टी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी मार्जिनली पॉजिटिव दिख रहे हैं लेकिन हकीकत ये नहीं है। आज ऑल these indices they open वेरी बिग गैप अप लेकिन वहाँ से ये टूटा कोई जवाब नहीं है और जो प्रीमियम जैसे पिघल गया पूरा महीने का प्रीमियम को तो खा गया लोगों आज ही खा गया। लेकिन अभी जो निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी वगैरह पॉजिटिव में दिख रहे लेकिन जाके इसका प्रीमियम चेक करो तभी मालूम पड़ेगा। तो खासकर बैंक निफ्टी 8 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ लेकिन उसका जो सिंथेटिक फ्यूचर है वो डिस्काउंट में नेगेटिव में चल रहे हैं। तो इसके चलते हुए जितना भी सी प्रीमियम है उसमें बहुत ही ज़्यादा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला होगा आज। और इंडिया विक्स दिस इज अनदर थिंग दिस इज नॉट गुड फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स। इंडिया विक्स इतना नीचे आ चुका है इट इज़ कमिंग लेस दैन 11%। जो लो विक्स में क्या होता है ऑप्शन बायर और सेलर को कुछ नहीं मिलते हैं तो प्रीमियम नहीं रहते ऑप्शन सेलर्स के लिए। और ऑप्शन बायर्स का बात रहा तो अगर मार्केट मूवमेंट भी आ गया तो जो ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा नहीं तो ये दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से जो इंडिया विक्स करीब 12 और 13 के ऊपर आने चाहिए तभी जाके जो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए अच्छा रहेगा। और जो रुपी को देखें तो रुपी और कमज़ोर हो गया डॉलर के अगेंस्ट में। ये भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं और मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। डॉलर के अगेंस्ट में हमारा जो रुपया है वो मजबूत होना चाहिए तब जाके स्टॉक मार्केट में स्ट्रेंथ बनेगा। और क्रूड को देखें तो क्रूड हल्का सा नीचे दिख रहा है। ये हमारा जो बैंक निफ्टी के लिए अच्छा है और अगर क्रूड और गिर गया तो ये और अच्छा रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। Some of the stocks to watch. I'm not going through these details like Mahindra and Mahindra, Bajaj Finance, HDFC Bank, Trend, Dabur, Emami, Yes Bank, Solar Industries. Please pause this video and read the news in detail. So this will help you if you are trading in any of these stocks tomorrow. And
One important news, this is coming for ICICI Bank, is that so today DPIIT signs an MOU with the Pfizer. So those who are not knowing what is DPIIT, DPIIT means Department for Promotion of Industry and Internal Trade. Basically, their objective is to boost the startup and healthcare innovation. This is positive for ICICI. Please watch out ICICI positive movement tomorrow. If you are seeing any dip in ICICI, you can consider longs in ICICI for the short term. और ग्लोबल मार्केट में हम लोग देखेंगे तो यूएस में एक इम्पोर्टेंट डाटा आज पब्लिश हुआ सो दैट इज अबाउट द जॉब डाटा दिस इज द प्राइवेट सेक्टर जॉब एंड ये हंसने वाली बात है इनका जो जॉब डाटा बहुत वीक आया ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है और जो कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं जैसे इनका रोजगार गिरते जा रहे बढ़ते जा रहे और मार्केट खुशियां मना रहे तो करंट जो प्राइवेट सेक्टर जॉब आया 54,000 और एक्सपेक्टेशन था 73,000 तक आने वाला प्रीवियस मंथ का था 1 लाख के ऊपर था तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कितना घटकर आया हुआ है तो मार्केट का अनुमान यही है कि जो वीक जॉब डाटा का जरिए जो फेड रेट कट इसी महीने में कर देगा तो इसी खुशी में मार्केट ऊपर जा रहे हैं तो कल हो सकते हैं हमारा जो आईटी सेक्टर के लिए ये अच्छा रहेगा जो आईटी सेक्टर कल बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं या फाइनली लेट अस लुक एट द टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर फ्राइडे दैट इज टुडे. So if you look at Nifty 50, the key support it is at 24,670. So if Nifty is breaking below 24,670, then only consider aggressive shorts. The major support is intact at 24,550. Till the time Nifty is holding 24,550, bounces will be coming from all the lower levels. So resistance, first resistance is at 24,760 to 800 level. If Nifty is crossing about 24,760, then only consider longs. The major resistance, this is the psychological level 25,000. So in my view, if there is a break, a short covering will happen only about 24,850. So watch out these levels. So once that is bro, if Nifty is able to cross that level, then the next target is 25,000 and 25,200. That range you can see. In Bank Nifty, the key support levels are 53,800 to 53,950. If tomorrow Bank Nifty is breaking below 54,950, you can consider a short for 100 points. The resistance it is coming around 54,350 to 54,500 range. Sensex, the key support level, if you look here, it is 80,600 to 80,700. If Sensex is breaking below 80,700, you can consider 100 points downside. The resistance is at 80,800. If Sensex is able to cross above 80,800, then it will reach to 81,000 and further breakout will happen above 81,000. So here the key level is 80,600. So watch this level. So once Sensex is able to cross above 81,000, you will be able to see 81,300, 81,500 and all. And the PCR, if you look here for Nifty, it is 0.73, Bank Nifty 0.87, and Sensex is 0.84. This is showing the PCR is slightly in the oversold territory. So a bounce will happen if in case of any gap down opening. So the final this is my view, guys. So our market can remain in a range bound state with a slight negative bias. So I would recommend people to be cautiously optimistic. That means if market is taking support from the lower levels, like the major support, like 24,550 and all, and if it is bouncing, you can consider longs up to the resistance. And from the resistance, if it is coming down, consider short. That means it is sell on rise and at the same time buy on dips as well. Friends, why I'm saying cautiously optimistic on our market is that we need to understand. So, if our market, any of these indices, yes, अगर
जो रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन ले लेते तो इट विल बी ए सेल ऑन राइस मार्केट। अगर ये सपोर्ट से सपोर्ट जहाँ कोई कोई भी सपोर्ट है वहाँ से एक बाउंस लेते तो ये बाय ऑन डिप्स का भी रहेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। और ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 पॉइंट स्कैल्पिंग मोड में रहना। अभी क्या है, मार्केट का कोई ठिकाना नहीं है, आवर मार्केट इज डायरेक्शनलेस एट दिस पॉइंट। So trade carefully, keep as sell, don't do hope trading and all. Avoid carry forward positions. That's all in this video, guys. If you like the content, please like and subscribe to my channel. Thank you. Bye.